सेवा की कसम, देश सेवा की कसम। पूरी करी है पूरी करेंगे हम, देश सेवा की कसम, देश सेवा की कसम। आजादी की बोझ से हम बंधे वचन की डोर से, भारत के जन का धन संभाले हैं लगा के मन। हमने लिया था सेवा का प्रण, आज करें पुनः समर्पण। पूरी करी है पूरी करेंगे हम, देश सेवा की कसम, देश सेवा की कसम। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश के सभी वित्त, बैंक, बीमा और सरकारी कर्मी देशवासियों की सेवा में पुनः समर्पित होने का प्रण लेते हैं। मुस्कान की दौलत का हर घर हो एक खाता, विश्वास के बीमा से हो सबका पक्का नाता। आपका भरोसा अपनी जमा पूंजी, आपकी शाबाशियां है अपनी सारी रकम। पूरी करी है पूरी करेंगे हम, देश सेवा की कसम। हो जैसे आपकी जरूरत वैसे अपनी महारत, हो जहां आपको जरूरत वहां अपनी जमीन छत। नए भारत के हरदम साथ चले हम, बढ़ते रहे हैं बढ़ते रहेंगे अपने ये कदम। पूरी करी है पूरी करेंगे हम, देश सेवा की कसम, देश सेवा की कसम। हम अपने देश सेवा का भाव कभी न कम होने की कसम लेते हैं। पूरी करी है पूरी करेंगे हम, देश सेवा की कसम, देश सेवा की कसम। देश सेवा की कसम।
சேவைக்கெங்கள் கரம் தேச சேவைக்கெங்கள் கரம் முறையாய் செய்தோம் முழுதாய் செய்திடுவோம் தேச சேவைக்கெங்கள் கரம் தேச சேவைக்கெங்கள் கரம் சுதந்திரம் பெற்ற நாள் முதலே எமது வாக்குகள் நிறைவேறியது பாரத மக்களின் செல்வ நிதி காப்பதே எங்கள் வாக்குறுதி உங்கள் சேவையே எங்கள் பணி செய்கிறோம் அதை மீண்டும் அர்ப்பணம் முறையாய் செய்தோம் முழுதாய் செய்திடுவோம் தேச சேவைக்கெங்கள் கரம் தேச சேவைக்கெங்கள் கரம் சுதந்திர அமிர்த மகோத்சவத்தில் நாட்டின் நிதி வங்கி காப்பீடு மற்றும் அரசு பணியாளர்கள் அனைவரும் மக்கள் சேவைக்காக மீண்டும் உறுதிமொழி எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். புன்னகை சேர்ந்த வாழ்க்கைதான் ஒவ்வொரு வீட்டின் செல்வமே காப்பாய் வரும் விசுவாசமே அதற்கு நல்ல வித்தாகுமே உங்கள் நம்பிக்கைதான் எங்கள் மூலதனம் உங்களின் பாராட்டுதான் நம் எல்லோரின் செல்வம் முறையாய் செய்தோம் முழுதாய் செய்திடுவோம் தேச சேவைக்கெங்கள் கரம் எப்படி உங்கள் தேவையோ அப்படி எங்கள் சேவையே உங்களுக்கு எங்கு தேவையோ அங்கே அமைப்போம் கூரையே புதிய பாரத தேசம் இது இணைந்து செல்வோமே முன்னேறினோம் முன்னேறுவோம் வளமான பாதையில் முறையாய் செய்தோம் முழுதாய் செய்திடுவோம் தேச சேவைக்கெங்கள் கரம் தேச சேவைக்கெங்கள் கரம் நாங்கள் நாட்டின் சேவை உணர்வு என்றும் குறையாமல் இருக்க உறுதிமொழி எடுக்கிறோம். தேச சேவைக்கெங்கள் கரம் That is the second way of doing. Thank you.
तो उधर भी हाँ भाई बता शुरू करो फटाफट। Respected MD and CEO sir, Executive Director, GM from Corporate Office, Head Office, Field General Managers, Zonal Manager, presented here and virtually connected with us. A very warm welcome to all of you in this momentous event of our next transformational journey of KCC Digital Renewal. यहाँ उपस्थित BCG, सीसार के सभी गणमान्य विशिष्ट अतिथियों, हमारे प्रिय ग्राहक एवं इंडियन बैंक परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम इस विशेष कार्यक्रम का शुरुआत दीप प्रज्वलन से करेंगे। आदरणीय MD एंड CEO सर, ED सर से दीप प्रज्वलन का अनुरोध करती हूँ। इधर इधर हो गया ना। से करा लेते हैं, लेकिन वो उनके पास टाइम नहीं हो रहा है, मतलब प्रोग्राम पहले से Thank you, sir. Now, ladies and gentlemen, may I request you to kindly stand for Indian Bank anthem. स्वदेश भावना से बना ये इंडियन बैंक हमारा। स्वदेशी आंदोलन में गूंजा स्वदेशी नारा, स्वदेश भावना से बना ये इंडियन बैंक हमारा। रिश्तों की इस पूंजी का सदियों तक साथ निभाएंगे, ये बैंक है आपका अपना, हर मोड़ पे हमको पाएंगे।
हमारा दूजा सद्व्यवहार है। आप सबसे मिलकर बना ये इंडियन बैंक परिवार है। जो नाम जुड़ा है भारत से, इस नाम का मान बढ़ाएंगे। लोगों की सेवा में रहकर हम अपना फर्ज निभाएंगे। जोश है, हिम्मत भी है और आगे बढ़ने की ठानी है। नई सफलताओं की हमको लिखनी नई कहानी है। डिजिटल हुआ है भारत, हम डिजिटल सेवा को बढ़ाएंगे। हर सर्विस को अपनी हम डिजिटल पर लेकर आएंगे। विश्वास की इस परंपरा को आगे यूं ही बढ़ाएंगे। ये बैंक है आपका अपना, हर कदम पे हमको पाएंगे। हर कदम पे हमको पाएंगे। हर कदम पे हमको पाएंगे। थैंक यू एवरीवन। जैसे कि गीता में कहा गया है, सुवर्ण रूप माणिक्य वस्नय रूपी पूरी तथापि पार्थ न्यायो कृषकम वक्तृष्णाया। अर्थात मनुष्य कितना भी धनी क्यों न बन जाए, उसकी भूख और तृष्णा केवल एक कृषक ही मिटा सकता है। और इसी जज्बे के साथ इंडियन बैंक ने अपने किसान ग्राहकों के लिए केसीसी डिजिटल रिन्यूअल का सुविधा उपलब्ध करवाया है। May I please request General Manager Sri Mahesh Kumar Bajaj for welcoming us. Respected MD and CEO sir, ED Imran sir, ED Ashwini sir, my dear colleagues present here virtually as well as physically, and Kisan Bhaiyon present here as well as present virtually in various zones. As we all know, part of the project Wave, we recently started our first product PAPL, which is a roaring success for the bank. We have done more than 115 crore and 6,692 precisely the number of accounts we have already done. And good thing is there is hardly any default. So we have been inspired by that success. So we thought of bringing the next product, KCC, because at least I wanted, there is a big portfolio for the bank. At the ideation stage, when we were discussing with BCG team and our RBD team, I was very closely involved because of various reasons. I have also worked in rural branches and I am the proud owner of KCC of Indian Bank. So I was involved with them. Normally what we do, we see what is happening in the industry, like PAPL, we don't invent a new wheel. We see what is successful in the industry, we do it. But in case of KCC, we have seen a couple of banks, 2-3 banks in the industry, they have done KCC renewal. But that was not end-to-end digital. Some cases, the customer has to do digitally at his home, then next day he'll come to the branch, give the reference number, and then the account will be renewed. Some of the cases, it is done digitally, but at the evening, the loading is done, that is through some fintech company. But what we did, for us, it is end-to-end, and we are proudly we can say the Indian Bank is the first bank in PSU, and apart from that, we have taken care of the customers who have feature phones. More than 40 crore people in India, they are having feature phones, more than 35%. So we have done the SMS journey for them also. Bank has taken care of those customers. So with a lot of the work done by the team, RBD, BCG, CISAR, even till Friday, we were in production. Team went outside. We did a lot of testing. In case of PAPL, it was easy because we have done testing on the closed circuit within ourselves. In this case, because we need money in the account and doing testing was a bit of tough task for us. But with all those things, we could do it. And the end, I won't take much time already, we are delayed. I again welcome all my the customers as well as the zonal manager, FGMs and respective MD and ED sir. With that, I wish the success for this product. For the entire field, I request to make it popular and take the benefit of this new product. Thank you very much. थैंक यू सर। बैंकिंग इंडस्ट्री के इस ऐतिहासिक सफर के
कुछ पल हमारे साथ शेयर करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी बीसीजी के एमडी एंड सीनियर पार्टनर माननीय श्री आशीष गर्ग जी को। Thank you, madam. Good morning, MD and CEO, EDs, Shri Bajaj, all the top executives from Indian Bank, as well as respected customers who have joined us, maybe in various parts of the country and in Chennai. So, first of all, compliments and congratulations on a fantastic start to your digital journeys with BAPL. But this promises KCC Renewal promises to be even a bigger journey, a bigger movement for Indian Bank. I think what has been achieved in such a short period of time is truly remarkable. And as we have seen in a very short time, in about 45 days at PAPL, this is a win-win for everyone. It's a win for the customers because they can be at their own locations and using the power of mobile phone, both on smartphones and feature phones will now be able to renew their KCC loans. But also for the field because they actually can get a lot of work done without having to do the routine and increase the workload at the branches. And of course, for the head office and the zonal offices, this means उस कुर्सी पे रख के निकालो बैग उस कुर्सी पे रखो this really means more products can be launched. We can capture from a strategic perspective. From a strategic perspective, Indian Bank can really take a very good share in this business, a very attractive share in this business. As we all know, KCC, customers will be able to renew their accounts up to 1.6 lakhs. We are starting with a subsection, a part of our KCC portfolio under this. But over a period of time, and MD sir has clearly laid out the path, we will accelerate very fast to cover a very large portfolio of KCC that can be renewed under this digital journeys. I think while we are starting off with, we have many more innovations. While Mr. Bajaj spoke about the feature phones and the smartphones, there are many more. There are many more features that we have lined up. We will be adding vernacular language support in the renewal journeys. I think that will make it accessible to even a larger population, a larger customer base, as well as we'll be thinking about people who do not have KCC right now with the bank. So new to bank customers, we will bring them here, and at some point of time, as our experience kind of goes on, we will also suggest how we can look at this as a business opportunity and go beyond 1.6 lakhs. Net, I think this is a very, very momentous time for the bank. I think in a very short period of time, you have been able to launch, journeys which are not just focused on the urban and the metro client segments, but journeys that are going to help each and every Indian in rural and semi-urban area as well. My huge compliments and congratulations to the Indian Bank team. Thank you, sir, for being there with us in this digitization journey. Now I invite Sri Anshul Garg, Principal, BCG, for presentation. Good morning, MD sir, ED sir, all of the Indian Bank colleagues and beloved customers. It is a very proud moment that we are launching our second digital product. As we know, we started this journey When we started this journey, we decided to prioritize 4 products. These are products across the RAN segment. We've already launched our first product in retail segment, pre-approved personal loan, and it is a huge success with all the Indian Bank customers. Today, we are launching the second KCC Renewal product, and over time, you would see more products coming in jewel loan, in the MSME segment as well.
I'll quickly take you through some of the key features of this new product, as Bajaj sir was mentioning. The most important thing is that no customer has to visit the branch for renewing KCC. अगर कोई कस्टमर एलिजिबल है तो उनको घर बैठे सहूलियत मिली हुई है दैट दे कैन जस्ट रिन्यू, वो अपना केसीसी रिन्यू कर सकते हैं अपने फोन के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू एज वेल. देयर इज नो फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, किसी तरह का कागजी कार्यवाही नहीं होगी. ये आप अपने मोबाइल बैंक के थ्रू, इंटरनेट ओएसिस के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं. प्लस अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप एसएमएस जर्नी भी कर सकते हैं. रिन्यूअल विल हैपन विद इन मिनट्स. नवीनीकरण कुछ ही मिनटों में चंद आपके सामने हो जाएगा बिना आपको ब्रांच जाने की जरूरत की. The journey is available through all the different channels. The customers could start it through their mobile banking by going into apply for renewal tab in the IndOasis app. कस्टमर अपने मोबाइल के जरिए IndOasis के जरिए अप्लाई रिन्यूअल बटन पे क्लिक करके जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. दे कुड इवन स्टार्ट इट थ्रू द ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग. इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी इस जर्नी को स्टार्ट किया जा सकता है या फिर ये वेबसाइट के थ्रू भी की जा सकती है. सो इन द ब्रांचेस, अगर फील्ड में हमारे ब्रांच मैनेजर्स, हमारे बीसीज कस्टमर को किसी तरह का सहूलियत प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो वेबसाइट के जरिए कस्टमर को मदद करके भी ये जर्नी करवाया जा सकता है. सो द जर्नी कुड बी असिस्टेड जर्नी एज वेल थ्रू द वेबसाइट. I'll just quickly take you through what the journey looks like. It's a simple 3-step process. First step, you just have to see what is the summary of your account. You have to select your account, whichever you want to renew. Second, it send you an OTP which says that this is the screen shows the outstanding amount and an OTP would be sent to your mobile. Third, you just have to select the option if you want to get an insurance along with the journey. If along with the product, you can do that. So you just have to select the insurance, yes or no. And if you want to extend the limit by 10%, then you have an option for that. तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस है. सबसे पहले आप अपना अकाउंट सिलेक्ट कीजिए जिसको रिन्यू करना है. नंबर 2, आपके सामने उसका समरी आ जाएगा. यू जस्ट हैव टू कंफर्म थ्रू ओटीपी. आपको सिर्फ ओटीपी के जरिए कंफर्म करना है कि आपने कुछ भी कोई भी नया तरह का क्रॉप नहीं यूज कर रहे हैं. एंड थर्ड, आपके पास एक समरी टेबल आ जाएगा जहां पे आपको ये सिलेक्ट करना है. Similarly, on the SMS journey, if your account already has sufficient balance, then it is 2 SMS journey. Number 1, you have to send RNW space and the 4 last digits of your account number, of the KCC account number, to a given phone number. So step 1, आप लोगों को RNW space 4 digits का अपना KCC का last 4 digits account के SMS करने हैं on this given number. Number 2, अगर आपके अकाउंट में बकाया राशि इनफ है तो वो जर्नी वहां से स्टार्ट हो जाएगा. अगर देयर इज सम बकाया राशि जो कि आपने, इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सफिशिएंट बैलेंस इन योर अकाउंट, अगर कोई बकाया राशि बचा है जो आपको डालना है अकाउंट में, तो वहां पे आपको एसएमएस के जरिए बता दिया जाएगा व्हाटएवर कितना अमाउंट आपको डालने की जरूरत है. एंड देन यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट CNF स्पेस द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ योर अकाउंट. सो सेकंड एसएमएस आपको भेजना है CNF स्पेस लास्ट 4 डिजिट्स अपने अकाउंट के. एंड इसके थ्रू जैसे ही आप सेकंड एसएमएस भेजेंगे कुछ ही मिनटों में आपका केसीसी रिन्यू हो जाएगा. एंड द लास्ट इज कांग्रेचुलेशंस. सो आफ्टर दिस यू विल रिसीव आइदर ऑन द स्क्रीन इट विल शो यू दैट द रिन्यूअल हैज हैपेंड, और ऑन द एसएमएस यू विल गेट एन एसएमएस कंफर्मिंग दैट द रिन्यूअल हैज हैपेंड. जैसे ही आप ये प्रोसेस करेंगे तो उसके बाद या तो आपकी स्क्रीन पर, अगर आप मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं तो वहीं पर आ जाएगा दैट कांग्रेचुलेशंस, आपका ये जर्नी हो गया है और आपका केसीसी रिन्यू हो गया. या फिर अगर आप एसएमएस के थ्रू कर रहे हैं तो आपको एक कंफर्मेशन एसएमएस आ जाएगा दैट केसीसी रिन्यूअल हैज हैपेंड. सो दैट्स अ वेरी सिंपल 3-step प्रोसेस. विद दैट आई विल जस्ट हैंड इट ओवर टू मैम. Thank you, sir. Now let's hear from our top management. May I now invite our Honorable Executive Director, Sri Ashwini Kumar sir, for sharing his thoughts.
Very good morning, respected MD Shri Jain Saab, my colleague on the board, Shri Imran Ji, general managers, field general managers, zonal managers, other field functionaries, and above all, our respected customers. Well, as you all know, bank started the ambitious digital journey, and in that step, first product was PAPL, which we launched, and we have all seen the success of that product. Within a short span, we have crossed 115 crore. And as a next step today, as you already have been told, that we are the first bank in the industry who's launching end-to-end digital customer journey for the KCC renewal. My compliments to the entire team involving TMO, our consultants, BCG, CISAC team, RBD team, and other functionaries involved in this journey. Well, as you all know, that today customers are always on the move. चाहे वो हमारे किसान भाई हों, वो हमेशा कहीं ना कहीं खेतों में काम में चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत मुश्किल हो जाता है बार बार ब्रांच के अंदर विजिट करना, अपनी लिमिट्स के रिन्यूअल के लिए जाना. तो अब जैसे आपको डेमो में दिखाया गया, एंड घर बैठे खेतों में काम करते हुए, कहीं और जाते हुए आप लोग अपना KCC अकाउंट का रिन्यूअल कर सकते हैं. नाउ अब हमारे जो स्टाफ हैं उनके लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि कस्टमर्स को अवेयरनेस कराना. वी नीड टू मेक आवर कस्टमर्स अवेयर, वी नीड टू पॉपुलराइज, वी नीड टू एजुकेट देम, make them aware that this is the journey available with us. Only then we can see the success of this journey. Otherwise सिर्फ ये एक कागज में रह जाएगा that we have launched the product. As we have seen the success of PAPL, all field functionaries have contributed a huge amount of effort and they have educated the customers. तो similarly KCC के लिए भी हमें हमारे जो ग्राहक हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको जागरूक कराना होगा, तो ताकि वो सब इसका लाभ उठा सकते हैं. सो बैंक एक के बाद एक डिजिटल जर्नी लॉन्च कर रहा है. आई थिंक दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम बैंक हैज लॉन्च सेकंड जर्नी, एंड गोइंग फॉरवर्ड few more journeys are planned. As the day come, we will be again launching more journeys for the benefit of all our customers. Once again, I compliment to the entire team involved in the journey, and my best wishes to the field. Thank you. थैंक यू सर. अब हमारे आदरणीय ईडी सर श्री इमरान सिद्दीकी जी से विनम्र अनुरोध है, कृपया यहाँ पधारें और KCC डिजिटल रिन्यूअल पे अपना दृष्टिकोण हमारे साथ शेयर करें. नमस्कार, MD and CEO Jain Saab, my colleague on the board Ashwini ji, Mr. Ashish Garg, MD BCG, and Anshu and his team present in the hall because they have worked a lot. Team CISAC, general managers from the corporate office, field general managers, zonal managers, and other colleagues who are present in the hall and who are connected through it. And my dear customers, on 27th April, we launched our first product, that was PAPL. And within a short span of 1.5 months, we are coming up with another product, that is KCC Renewal. My congratulations and my compliment to the entire team from the BCG, from the CISAC, and from our staff for launching this product. KCC Renewal really
It is a big task in 2 months, once in January and once in July. Our entire workforce, particularly in the northern belt of the country, northern and eastern belt of the country, is involved in renewal of the KCC only. Along with our team, our farmers, they have to also come to the branch for getting the limit renewed and getting the limit enhanced. तो ये जो रिन्यूअल है हम 3.5 मिनट में करने जा रहे हैं। 3.5 मिनट में तो बेचारा जो हमारा जो किसान था, हमारा फार्मर था, वो ब्रांच में आकर के ब्रांच मैनेजर से बात भी नहीं कर पा रहा था। मतलब अगर वो एक वाउचर पास कर रहा, ऊपर उठा कर देखेगा, उतने देर में जो है वो 3.5 मिनट चले जाते। तो ये जो जर्नी है, ये हमारे कस्टमर के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और उतनी ही बेनिफिशियल है, और उससे ज़्यादा बेनिफिशियल है जो है हमारे जो स्टाफ है, जो हमारे ब्रांच हेड्स हैं, जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं, जो इस कार्य में इन्वॉल्व थे। जो जुलाई में आप किसी से बात करो, साहब किसी से रिन्यूअल में लगे नहीं तो एनपी हो जाएगा। तो वो समय अब वो बचा पाएंगे, क्योंकि ये काम अब उनको नहीं करना है, ये स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस से जो है वो सिस्टम कर देगा। और अभी जो इनिशियली हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो 1,60,000 तक की लिमिट के लिए क्या हमारे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ द जो हमारे किसान भाई हैं वो इसमें जो है इस लिमिट के अंदर जो है वो कवर हो जाएगा। आगे चलते जो है हम इस लिमिट को जो है वो बढ़ाएंगे भी, लेकिन इनिशियली हम लोगों ने जो है इससे जो शुरू किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है, क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं होगा, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी फील्ड फंक्शन की है, क्योंकि यहाँ पर एफजीएम्स और जोनल हेड्स कनेक्टेड हैं, वो देखें कि जो ब्रांचेस हैं एक बार डाटा जो है वो इसको जो है क्लीन करें, इसको करेक्ट करें। क्योंकि मोबाइल के थ्रू ही होना है, अगर मोबाइल नंबर ही सही नहीं फीड है या अकाउंट KYC वेरीफाइड नहीं है, तो फिर ये जर्नी जो है वो बार बार हमारा नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो अनुरोध है कि फील्ड फंक्शनरी इस प्रोडक्ट का लाभ लेने के लिए सबसे पहले जुट के जो है वो जो है जो हमारा नेक्स्ट फेज आ रहा है जुलाई वाला, उससे पहले डाटा एक बार सही करा ले, जिससे कि इस बार जो है वो हमारा KCC रिन्यूअल सारा जो है वो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या डेस्कटॉप के थ्रू, असिस्टेंट जनरल के थ्रू या SMS के थ्रू किया जा सके। बहरहाल जब सक्सेस मिलती है तो हमारी इच्छाएं, हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। मुझे याद आ रहा था हम CIB कर रहे थे, उस टाइम हम स्केल 4 में थे। वैसे ही ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था, तो जो पहला पेपर था वो हमने बड़ा रिलेक्टेंटली कोई पढ़ने वढ़ने का, तो ब्रांच मैनेजर दैट को अगर आप चीफ मैनेजर हैं तो बहुत मुश्किल से मौका मिलता था। खैर हमने पहला पेपर जो है चूँकि बैंकिंग का था दिया और पास हो गए, तो दूसरा पास करने के लिए हमारी इच्छा जो है और बढ़ गई। तो दूसरे के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल के पढ़ा। जब वो भी पास हो गए तो हमने कहा आप CIB कंप्लीट करना ही किसी के लिए, जबकि तीसरा पेपर जो था वो थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था। उस जमाने में फील्ड में इतना पढ़ने लिखने का वो नहीं हुआ करता, लेकिन फिर पढ़ के हमने किसी तरह जो है CIB जो है फिर वो एक बार में ही क्लियर किया। वैसे ही अब हमारा जैसे ही पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उस वक्त हम लोगों को बहुत से अप्रीहेंशंस थे कि क्या होगा, कैसे होगा। अब दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, अब हमारा जो है अंशुल और बजाज से यही एक्सपेक्टेशन की, तो 2 प्रोडक्ट हम कहने जा रहे हैं, गोल्ड की जो गोल्ड लैंडिंग है गोल्ड लोन की, और मुद्रा जो है अब हमको जो है 1 महीने में ही चाहिए हम लोगों को जो है। चलो, लेकिन फिर भी जो अभी तक काम किया है उस काम के लिए जो है आप लोगों को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स, और मेरी इच्छा है कि आप हमारी ये इच्छा जरूर पूरी करें। थैंक यू। धन्यवाद सर।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वो प्रत्याशित घड़ी आ चुकी है जिसका हम सभी को इंतजार है. Ladies and gentlemen, now it's time for launching the journey of KCC Digital Renewal. May I request our MD and CEO sir for doing the honor. And we will also see live demonstration of KCC Digital Renewal. हो गया. डेमो ऑटो चलाएगा, किसको चलाना है? चलो. नमस्ते चाचा जी। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो? अब क्या बताएं बेटा, फसल बुआई का समय चल रहा है और बैंक जाकर के केसीसी खाता रिन्यू करवाने का समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। रिन्यू नहीं चाचा जी, रिन्यू। वही तो कह रहा हूँ, रिन्यू। अच्छा, ठीक है। फिर अब अगर समय से रिन्यू नहीं करवा पाया तो सरकार द्वारा ब्याज दर में जो छूट दी जाती है वो भी नहीं मिल पाएगी। बस इतनी सी बात? आपका केसीसी खाता तो इंडियन बैंक में ही है ना? हाँ, क्यों? इंडियन बैंक ऑनलाइन केसीसी खाता रिन्यूअल की सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत आप अपने स्मार्टफोन में उपलब्ध इंडियन ओवरसीज ऐप के द्वारा बिना बैंक जाए खाता रिन्यू कर सकते हैं, वो भी खुद से। बिना बैंक जाए? जी चाचा जी। वो कैसे? रुको, इसके लिए इंडियन बैंक के मोबाइल ऐप इंड ओवरसीज में लॉगिन कीजिए। अकाउंट डिटेल्स के तहत उपलब्ध अपने केसीसी अकाउंट नंबर का चयन कीजिए और वहां दर्शाए अप्लाई फॉर रिन्यूअल बटन को दबाइए। इसके बाद स्क्रीन पर आपकी बकाया राशि दिखाई जाएगी, जिसका भुगतान आप वहीं अपने बचत खाते से ट्रांसफर करके कर सकते हैं। फिर आप अपनी जमीन का विवरण, फसल प्रणाली इत्यादि में कोई बदलाव न होने की घोषणा करें एवं फसल बीमा का अधिदेश दर्ज करें। इसके बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे आपको दिखाए गए स्थान पर भरना होगा और बस आपका खाता रिन्यू हो जाएगा। ये सुविधा इंटरनेट बैंकिंग और इंडियन बैंक की ऑनलाइन वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अरे वाह, सुविधा तो बहुत अच्छी है। पर बेटा तुम तो जानते हो, गांव में कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उन्हें तो बैंक जाना ही पड़ेगा ना। नहीं चाचा जी, इंडियन बैंक की ये सुविधा एसएमएस पे भी उपलब्ध है, जिससे फीचर फोन उपभोक्ता सिर्फ महज 3 एसएमएस में अपना खाता रिन्यू कर सकते हैं। भाई वाकई मानना पड़ेगा, इंडियन बैंक अपने हर ग्राहक की सुविधाओं का ख्याल रखता है। ये प्रोडक्ट हम लोग इनिशियली जो है 30 जून को लॉन्च करने वाले थे, फिर एमडी साहब ने कहा नहीं ये 15 तारीख को जो है वो लॉन्च होगा, फिर बजाज ने 2 दिन पहले करके दिया। अब ये हम लोग 15 अगस्त तक लॉन्च करने वाले थे, हमने कहा कि 1 महीने करके दो, ये मुझे 27 दिन में करके देगा। चलो अच्छा प्लीज। It's time to hear from our respected MD and CEO sir. Felicitations. So, अच्छा वेरी गुड। तो एक बार हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। हो जाएगा ना? चलो नहीं वेरी गुड। रीजनल लैंग्वेज में अगर फोन में अगर सेटिंग्स है आपका रीजनल लैंग्वेज का, तो ऑटोमेटिकली कितने लैंग्वेजेस हैं? ये हमारे अच्छा अभी नहीं है। आपके फोन में अगर सेटिंग किया हुआ है ना, जैसे इनके यहाँ तेलुगु आ रहा है,
देखिए तेलुगु में अपने आप आ रहा है नहीं नहीं नंबर पुट करना नंबर 30113869 एक दो का करवा दो, बाकी का आप लोग बाहर से करवा देना, ठीक है। और 958 हो गया ये मैं 951 हो गया, हो गया 958 अच्छा आपका भी हो गया, वेरी गुड। देवेंद्र 888 रानी पीठ नो प्रॉब्लम अभी तो आराम 9 ये more comfortable. सारे में इजी नो प्रॉब्लम 8 9 8 0 0 0 बोलना जी तेलुगु में तमिल 5 But we have to educate them so that future they do themselves. Now we are Actually, we have to convert this to a regional language. Application will be converted into a regional language. Then they will read and then लैंग्वेज सेलेक्ट करने का रखेंगे, कम से कम जो मेजर भरने के लिए लैंग्वेज है उसमें कर देंगे। actually Hindi and Tamil and both. हिंदी, तमिल, तेलुगु, That बंगला, will be converted. भैया इतना तो कर देंगे हम। हाँ इसको कर। So regional language बजा साहब। हाँ हाँ regional language must. यस कर देंगे। इनका भी हो गया, इनका भी हो गया, कर लिया। हाँ इन्होंने कर लिया। हाँ सबको कस्टमर को आगे भाई थोड़ा सा बेटा इधर हो जाओ। हाँ यस बस। हाँ देख लेना जल नहीं जाए पीछे, वो आग लगी। अच्छा इन लोगों का वो दिखा रहा हूँ, सामने करिएगा तो नजर आएगा। चलो थैंक यू। चलिए एवल अमाउंट पन्ने 10,000 it was there sir, now it has become 11,000 10% increase हो गया। चलो मैडम बहुत बधाई हो आपको। तमिल डलवा देते हैं, तमिल और बांग्ला दो कम से कम इमीडिएट कर। हिंदी तो है ही, हिंदी होगा, हिंदी होगा, हिंदी है, होना चाहिए, नहीं तो हिंदी बगैर ये एप्लीकेशन हिंदी में अभी क्या है? आज इंग्लिश हिंदी करो, हिंदी बांग्ला और तमिल तो कराओ। हिंदी बांग्ला और तमिल फटाफट करो। हिंदी बांग्ला तमिल 1,50,000. वेरी गुड, Additional. वेरी गुड। Happy with branch? चलो ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲನಾ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ how much it is 125 has become 10%. चलो वेरी गुड, good चलो भाई बहुत बढ़िया। 1 lakh rupees 1 lakh rupees चलो इसको लैंग्वेज मस्ट है। थैंक यू हिंदी तो बगैर चलेगा ही नहीं, मेजॉरिटी तो कस्टमर है। हिंदी, तमिल और बांग्ला ये तीन तो चाहिए। हिंदी हम नहीं, मुझे लग रहा था चलो देखो आ जाएगा। कर दे। It's time to hear from our respected MD and CEO who has been the torchbearer of this KCC digital renewal journey of our bank. गुड मॉर्निंग ईडी इमरान जी, ऐश्वर्य कुमार जी,
Ashish from BCG, team BCG, or GMs, FGMs, ZMs, or customers, good morning. As you know that bank is going for a big transformation journey in all aspects of the banking. We started our journey from tablet banking where we started opening up saving account. Then we added PPF in that and now we are adding current account in that. So that is a liability side. In asset side we have started with the PAPL, pre-approved personal loan, and Bajaj has told that around 115 crore of a loan we disbursed. Now our job is to increase the funnel, increase the eligibility of the customers, and now today we are launching this digital KCC renewal. In fact, digital KCC renewal issue was discussed in the last business side conference wherein we discussed that there are huge PNPA in July, and originally it was planned to be by the end of July or best to best in the end of June. But my huge compliment to Bajaj Saab, BCG, RBD, entire team, they have made it possible. Even before 15, that is on 13. And that coincides with the birthday of Bajaj Saab. Very good. There cannot be better gift than this to the entire bank that they have launched a digital KCC. And we have seen that people are happy within 2.5 minutes and 3 minutes they will be able to get their KCC renewed. And the benefit of KCC renewal is that you are continue to get at a subsidized interest rate your loan. If it is not happen, then what will happen? There will be an NPA. So there's a big difference between NPA to getting a loan at a very, very nominal rate with an increased amount. So that is a benefit of this KCC renewal. So this is one step towards our digitizations. Now going forward, what Bajaj Saab has told that we are going for gold loan, which is around a 65% of our agri book. So this will be a big achievement if we move to the agri gold loan and then the Mudra loan, and slowly we will be moving. In fact, in addition to this product, we are moving in all directions in digital. Even very shortly, our financial inclusion department will also coming out with the RFP wherein we are going to select TSPs who will be able to give them better services. So we'll increase our services on our FI platform with this new vendor. Not only new vendor, we will also going to increase our BC's network from 9,000 to maybe around 15 to 16,000 very soon. So that way we will be able to serve the nation in a better way. In addition to that, our IT department have just came out with this middleware. We have seen the middleware demo. The middleware is useful to not only to bank, even for getting more business from the non-bank players. We have seen that through middleware, this nowadays number of companies, whether the phone pay or digital pay or Google or all other companies are giving banking services, but they are not banks, so they are not connected with the NPCI or they are not connected with the RBI and all. So with this our middleware, we can approach to them and onboard in our middleware through which we can generate good income, good non-interest income, good our even float also. So that is a good opportunity for us. So that is a big achievement has been done by our IT team. So my compliments to them as well, because they are also working day and night. In addition to that, our IT team is working on that centralization of servers, our trade, our forex services, which will be digitalized maybe by July or so. This is for the initial. So bank is basically in digitizing all its operation one by one. Even I was discussing around a week back with our mobile team, because we want to increase our services on mobile team. So we have compared our services with other players in the industry, and we have zeroed down some of the services where we want to add in the mobile banking. So shortly in mobile banking too also we are increasing our services or our features for
better utilization of customer, for customer friendliness. So from internet bank, from this CBS, middleware, this our liability product, asset product, and now in HR side also, we have in PMS and all we have done, and maybe 29th of June we will come out with the KRIs of our second line officers. So in that way we will be able to give the KRIs of not only the first line officers, second line officers as well. So entire bank in HR side also will be transformed. So liability side, asset side, and new business model. Because now what happens with the PAPL or a that KCC or a Mudra or a gold, or even going forward housing and auto and all, because your business model will itself change, totally change. Now we need to hire the people to support this model, because we need to have a digital managers to manage these products from the back end. Because suppose you come out with this KCC, there should be a team behind that, so that team will work on that, team will go for improvement, team will enhance the features, so that transformation will happen very shortly, slowly in all products, not only KCC, in PAPL, in housing, in auto, in personal. Everything will change because of the new business models. We are also starting this analytics center of excellence, ACOE, where we need to have a data scientist, then the EDP manager or the data managers, those who can understand the data. But the fact remains, now we have to clean our database. Every services will be based on the database which we are having. The product which PAPL we came out, we are giving to the customers who are having salary accounts. But presently in our system, we got only 80,000. So in the immediate future, our job is to codify this salaried customers so that we can increase our funnel and give our PAPL to measure number of customers. Likewise, for the KCC also, eKYC and all has to be done. So our focus will now be shifting towards our data cleaning side. Maybe 10-15 days here after, entire workforce will work on cleaning the database. When we have a clean data, naturally we can offer number of products to our customers centrally. So this will be because the way we have done in mobile banking, where we have increased our number from 60 lakhs to 95, 96 lakhs, and we are moving towards 1 crore. So I'm hopeful that with our all efforts in all directions, whether it's the HR side or IT side or a liability side or asset side or our FI side, like, we all will be working towards digitization to give better customer experience to our customers. And in this regard, we have seen this digital KCC renewal is a big step to my mind, and slowly we will be giving to the new customer as well as from 1.6 to more than 6, because then the documentations, your land details, all others will be required. But since we are having this middleware, now we can have an API integration and move further. So at this moment, my big compliments to entire team led by Bajaj Saab, BCG, RBD, and entire our corporate office team, and also the support of our team. Thank you very much. धन्यवाद सर, आपकी यही बात होते हैं, और वो ग्राहक अगर किसान हो तो बात कुछ और है। और इसी जज्बे को याद रखते हुए हम अपने सारे ग्राहकों का सहे दिल से स्वागत करते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं। On behalf of Indian Bank, I thank all our esteemed customers for being with us throughout the journey. Today, we have the honor to felicitating some of our customers who is here with us. May I request MD and CEO sir, ED sir, to do the honor.
इधर ठीक रहेगा यार। ये तो ठीक है राइट फेस N. Devendran. पहले उधर पीछे से मंगवा लो, इधर से ठीक है सीधे चलिए इधर से उधर आसान। नहीं सर, कौन क्या है नाम? M. Bharati. आइए आइए। Mr. K. Jayapal. Mr. A. Sundarajan. Mr. K. Thirunavakarasu. Mr. K. Ravi. आ जाओ आ जाओ। बिल्कुल आप लोग भी इधर से आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। अरे खाने वाले का तो बहुत काम है भाई। Mr. Umapati. करते हैं आप लोग आगे नीचे बढ़ते रहे। Mr. Prashant. प्रशांत जी आइए। Mr. Mohandas. already received Mrs. Tirupura Sundari. Mr. Subramanian. अगला नाम भी पुकार दो। Sai Kumar. आइए आइए कोई नहीं आप Lakshmi. Sarada. Mrs. Sarada. लीलावती। Mr. Sai Kumar. हो गया? Anybody left? एक बचा है? फोटो अभी आ जाएंगे।
थैंक्स, 1 मिनट, बस 1 मिनट, मेरे को जरूरत भी नहीं है। नहीं, धन्यवाद कर, सभी का धन्यवाद। अपनी तरफ से कर दो। हाँ, कर दो अपनी तरफ से, खत्म करो। Now may I request GM RBD V Chandrasekhan sir for Just 1 concluding minute, remarks. 1 minute। हाँ, बैठ जाइए। Respected MD and CEO, sir, executive directors, GMs, FGMs, and all my colleagues of Indian Bank, ZMs, esteemed guests from BCG, CSAT, Kisan Bhaiyon, farmers, ஒருவர் பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். With changing customer preferences across all domains of banking services, digitization of agricultural lending is inevitable. Further, there is a potential to use these man-hours of customers and also the branch managers for further onboarding of fresh business, creation of these types of digital journeys with straight-through processing and assisted journeys will further mitigate operational risks through streamlined and uniform processes. As already explained by the team, this KCC digital renewal dedicated to our small and marginal farmers is a simple 3-click journey with added functionalities of insurance mandate registration. In Tirukural, Ulvar Ulagatarku Ani Agdatradu Eduvare Ellam Poruthu. It is farmers are linchpin, anchor of the world, for they support all others who cannot till. Yes, sir. Our MD sir recognized the role of farming community by making KCC renewal through digital journey. Thank you very much, sir. At the onset, I would like to thank our MD sir for setting the vision right and leading the entire transformation journey. It is primarily because of the trust Sir has placed in the team, we were able to deliver the journey within an accelerated pace. I thank our Executive Director, Imran Amit Siddiqui sir, for his consistent support and granular monitoring of the project. And I thank our Executive Director, Shri Ashwini Kumar sir, for rendering valuable inputs for enhancing the journey and supporting the entire transformation. I thank our digital transformation consultants, BCG, and our CSAR team also in this occasion. Our digitization team, led by Mr. Magesh Kumar Bajaj, DJ Mr. Amit Chaudhary, and the entire team for spearheading the entire journey right from conceptualization and coordinating effectively between various stakeholders for smooth implementation. I thank GM Deepak Sardaji and ITD loans team, network team for providing unhindered support, GM Bharati and DBD team, especially in the SMS journey development. Our esteemed customers who graced this occasion with their presence in spite of their busy schedule. I thank Principal Image and his team for making arrangements here in short time, and team CCD marketing for making beautiful arrangements. Finally, my own team, DJ Mr. Mani Subramaniam and AGMs, CMs for their tireless efforts in January finalization, and now it is adoption through sensitization of field functionaries. Now we need support from all our FGMs, ZMs, branch heads, RDOs and BCs. Within this 15 minutes, I am happy to inform you that 8 renewals are already happened through this online. My request to the field is, please see the mobile numbers and ensure EKV updations are there so that maximum number of farmers we can enroll, and it will be easy for both the sides. We are also working for further enhancements of the journey. Please drop your suggestions. Thank you all. Now, I would like to request everyone kindly stand for the national anthem. Yes. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल
मंगलवंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलचितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य दाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे